Kshitij, you there? Kshitij, am I यस audible? सर। हाँ हाँ जी। जी, नंबर मिले केमिस्ट्री के मिले कितने? 22। ओके, ठीक है। इसमें कहाँ गलती हुई? गलती एक तो क्या कहते हैं, वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में गलती हो गई थी एक। सिली मिस्टेक। हाँ जी। ओके, और एक फॉर्मल चार्ज में कोई कैलकुलेशन इधर उधर की हो गई, मतलब फॉर्मूला सही लगा था, कैलकुलेशन इधर की उधर हो गई। राइट। वाओ। एंड और सर कुछ दो एमसीयू गलत हुए थे बस। ओके, एंड क्या कहते हैं, एक जगह मेरा आधा मार्क कटा क्योंकि मैंने एलाबोरेट नहीं किया था। कहते हैं लाइक जो एनायन का रेडियस बड़ा क्या होता है कटायन से। ओके, गॉट इट। सो देखो, नंबर लाना अलग होता है और नॉलेज होना अलग होता है। यू शुड ऑल्सो बी एबल टू स्कोर वेल। पिछली बार से तो कंपेयर किया जाए तो अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं, बट पूरे आ सकते थे पिछली बार की तरह ही। आता यस। सब कुछ है लेकिन नंबर नहीं आते, ये सिचुएशन होती, राइट? Unless you do your assignments, you do practice at home of question paper in real situation, you can't score. वो एक additional step आपका missing है. Not that you're not knowledgeable, but knowledge is not translating into marks. Clear cut. Okay. So let's do one thing. Let's do some practice today on this topic. Work, power, energy, numericals, right? मैं क्वेश्चन देता जाता हूँ और डिस्कस करता रहता हूँ. First, we will do NCERT, which is probably the very basic one we will do.
And once we, तो सीधा नीट के ना कर ले। यार फिर वो MCQ हो जाते हैं, अच्छा। although not a bad idea, but becomes very restrictive. वो तब करे जाते हैं जब आपने काफी खुद प्रैक्टिस कर लिया, मतलब दे आर नॉट फॉर लर्निंग, दे आर फॉर टेस्टिंग एक्चुअली। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so ये आ गया। this is a case where what type of force is involved? फ्रिक्शन इंक्लूड करने का, फ्रिक्शन दे नहीं रखा। So there is a loss, right? हाँ जी। There is a loss, so you have to subtract the loss. The plywood has done work on the bullet. विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब 10% लॉस हुआ कि 10% ही मिली? बच गई। 10% ही बची। Correct. एक मिनट। से निकाल ली। ये हो गया सर, एग्जाम्पल 4 5.4। Okay, so you have taken half mv square. Okay, that's your initial energy.
हाँ जी. and then you come out with this energy. Yes, sir. Okay. And now emergent speed of the bullet, like बॉक्स से पेनिट्रेट होते हुए. You found this. Yes, sir. The emergent speed. Yeah. बॉक्स से ठीक है. पेनिट्रेट होने के बाद. Right. Next. सर इसका मतलब क्या है? देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर applied force reduces linearly with distance to 15 Newton. मतलब बता रहे हैं कि लीनियरली मतलब 50-49 ऐसे गिरती जा रही है स्पीड. 100 न्यूटन कांस्टेंट रही, फिर शी गॉट टायर्ड एंड देन इट स्टार्टेड. In a distance 10 meter. लिखा है द टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर्स. अच्छा, 10 मीटर तक जब पहुंचती तो 15 न्यूटन हो जाती है. यस, बाकी तो रेशो हर 1 मीटर में देर वॉज अ लॉस ऑफ 5 न्यूटन्स. एवरी 1 मीटर देर आफ्टर वॉज लॉस ऑफ. लीनियर है ना, तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके. And since it is decreasing, the slope is obtuse angle, not a increasing. The force is falling down. So work done is force into displacement. तो लाइक हम ठीक है. Okay, so first of all, you have to realize that the force in the first half of the motion is constant, and then the force becomes a variable force. So you will have two parts. पहले तो graph बनाओगे. First, you have to draw the graph between the Force and displacement. yeah. Sorry. Force and displacement graph. No, I think it's applied force versus frictional force. अच्छा. Plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton versus plot the force applied by the frictional force, which is 50 Newton versus displacement. Okay, 50 Newton. Okay, सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो नहीं दे रखा. मास दिया हुआ है. ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए क्या करने के लिए? लाइक फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कितना नेट फोर्स लग रहा है. हाँ, तो वो बता रखा है ना कि reduces linearly with 50 newtons. Okay, plot the force applied by the and the frictional force. दोनों ही करने हैं with the displacement. फ्रिक्शनल Two फोर्स. graphs have to be drawn, right?
One is applied force, the second is frictional force. Pushes a trunk, which is a rough surface, applies over a distance. Okay. There are Frictional force. progression tired, applied force reduces linearly. Okay. The total distance to visit trunk. Plot the force applied by the woman. फिर जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी, Mu mg. हाँ जी कांस्टेंट नहीं रहती वो। Yes. काइनेटिक फ्रिक्शन तो mu mg है, तो yes. एंड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट लगाना है ना, पहले तो कांस्टेंट ही रखनी है पहले 10 मीटर में. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, ये दो बनाने हैं। वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन दिया हुआ है. फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन्स. ठीक है, लैंग्वेज ठीक नहीं लिखी. विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का बनाना है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स. हाँ, पहले वो बनाना है. तो ये एक तरह से घटेगा नहीं। फर्स्ट 10 मीटर्स में तो निकाल लो पहले. फर्स्ट 10 मीटर्स अप्लाइड फोर्स इज 100 हाँ जी, and मैं it is वर्क डन इज 1000 जूल्स does it 10 इन 10 this मीटर। ये लिखो लाइक ना अभी. फर्स्ट लिख दिया मैंने 10 मीटर। लिख दिया है. ओके. और बाकी 10 मीटर में कोई वर्क डन नहीं है. बाकी के जो 10 मीटर्स में बाकी 50 न्यूटन का फोर्स रहता है ना। hey you have not. इसका क्या करा जो लीनियरली डिक्रीज हो रही है फोर्स. वो 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 सेकंड वेरिएबल फोर्स है. इट्स अ वेरिएबल फोर्स. वेयर हैव यू शोन दिस कि पहले वो 100 न्यूटन था. ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ 50 न्यूटन। सर बंद हो गया था. You can see the board or is it closed? इज क्लोज्ड। Yes. I think I don't know what happened. Suddenly it. Yes. So first of all, draw the graph so that you can understand the situation. बिना ग्राफ बनाए हुए, बिना वो करे हुए, F ये वर्सेस X का ग्राफ बनाना है पहले आपको. ये सब मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, पहले हाफ का सेकंड हाफ का। ठीक है. तो टोटल वर्क डन आ गया आपका है. हाँ जी, 1500 जूल्स। ठीक है. ग्राफ हाफ F अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो ये पहले तो 100 न्यूटन लगती रही है ना, फिर कम होके आधी हो गई. यस। ये 10 मीटर तक लगी, ये 20 मीटर तक लगी. हाँ जी, और एरिया This मतलब is यार very weird, right? That your force is fixed throughout the motion. यही बोला है। लिखा है linearly goes down. She gets progressively tired. For every 1 meter, she loses. So every 1 meter, she's going to lose 5 newtons. Right? So if you have 10 parts to this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then here it is going to become 50 newtons. Our applied force also goes down
but the friction stays as is. Friction doesn't change. So won't you lose energy against friction also? हाँ वो तो खैर conservation में आ गया. But what is the work being done to move a body which has two forces acting on it, one and two? So one work is your conservative work, which is, you're applying some force and covering some displacement, and it reaches here. And you say my work done is Fs total work, right? And there is a dissipative part to that work, which you'll lose. Who will provide energy for this also? अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, then what is your answer? F into S. हाँ जी But अगर फ्रिक्शन है, who is providing work for that? भाई अगर आप गाड़ी चलाते हो, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाते हो, don't you lose because of friction? But who provides it finally? the surface No, who provides it? Your effort will provide, has to overcome that, ना? वो भी तो वो का उसका अकाउंट कहाँ गया? ये तो वो है जब there is no friction. That's your work done. Frictionless surface, work done is there. Agreed. But where is the work done when friction is also involved and that gets dissipated? ये वर्क डन तो बॉडी के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बट व्हाट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन? You had to work against that also, right? तो Wasteful work. ओके बेसिकली हर एक मीटर में 5 न्यूटन कम होता है. वो फर्स्ट 10 मीटर में तो ऐसा है ही नहीं. फर्स्ट 10 मीटर में तो शी इज अप्लाइंग 100 न्यूटन्स. ठीक है तो पर फर्स्ट सेकंड 10 मीटर में मतलब 50 न्यूटन तो रहेगा ना, लेकिन फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर. तो सेकंड हाफ के लिए आप बोल रहे हो. मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट हाफ में भी तो आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेस्टेज हैज हैपेंड. यस So where is that wastage gone? Who is providing it? वो भी तो खाते में डालो यार. Who is providing it? You providing, right? So add the frictional work also. ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन्स Yes. तो -50 कर दो. नहीं सॉरी लाइक Work done तो -500 scalar होता है ना यार. नहीं -500 कर दो. Why minus 500? I'm saying who provides it? Who has done the work? Frictional force has also done the work. Right. But And who has woman. overcome friction? Woman. Exactly. So work done by the frictional force कितना आएगा? 500. पहला पार्ट क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस. पहले तो ये पढ़ लो. तो वुमेन का अलग निकालना है, फ्रिक्शन का अलग निकालना है. फ्रिक्शन का आ जाएगा 500 जूल्स. फ्रिक्शन तो थ्रू आउट 20 मीटर सेम ही है. हाँ जी. फ्रिक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, राइट? या तो all 20 meters friction is same. Minus 1000. Because it is -10,000. cos 180. Yeah. ठीक है. Frictional force was, I think, not 550 only. नहीं, sorry. And woman has done how much work? Total work done was 1500. Woman, only woman. Only. Applied force ने कितना काम करा है? वो तो नेटवर्क डन आ गया ना, इंक्लूडिंग बोथ द फोर्सेस. बट सिर्फ वुमेन ने जो काम करा है 1500 जूल्स. कैसे? 20 तक, यहाँ तक. हाँ, ये 20 वाला तक. एरिया अच्छा. और ये वाला एरिया. हाँ, ठीक एरिया है. अंडर द कर्व हो गया ना, एफएक्स ग्राफ है ये. Yes sir, 500 joules है ना. दिस इज 1000. This is 1000. This is 500.
दिस इज हाफ इंटू 10, सॉरी ये इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 50, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 250 प्लस 500, 750। ओके ओके। राइट, सो द टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड नहीं, फोर्स। एक मिनट, 15 न्यूटन तो सेकंड हाफ से कवर करते हैं ना, 15 न्यूटन फोर्स। हाँ, सेकंड हाफ जो होता है, तो बाकी का 10 मीटर तो 15 न्यूटन फोर्स से कवर करती है। नहीं, इस फोर्स से, विच इज डिक्रीजिंग बाय फ्रॉम 100 to 50 इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters। ओके मैंने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी को तो बोलूंगा लीनियर डिक्रीज। तो सात दिस सौ इज द पचास लीनियर, 750। यस। तो मतलब जो नेटवर्क डन आ गया, वो आ गया नेटवर्क डन निकालने को नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने सिर्फ बोला फाइंड द वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 meters सेपरेटली। 750, अब 1750 यस, work done by the woman, or 1000 joules, minus 1000 joules करेक्ट, by the friction force. यस। Okay. Next question. ये एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाल दिया ऑन योर राइट, ये रहा 5.6। सर, ये माइनस के क्या दे रखा है? It's some force which is inversely proportional to displacement. It's a variable force. It's a minus to show it's a retarding force. And there ये are two values to it. एक रोड पे 0.1 से 2.01 पे values different, and for a certain value of, I mean range of x, you can see the values. तो वो रेंज दे रखी है 0.1 to 2.01 में हाउ डज द फोर्स बिहेव, और बाकी जगह x पे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द फोर्स। देयर इज नो रिटार्डेशन अवेलेबल इन दोज पैचेस ऑफ द रोड। किसी जगह पे रोड पे फोर्स आ गई, वेरिएबल, फ्रिक्शनल इन नेचर बट वेरिएबल फ्रिक्शन। K is the kinetic energy. Kinetic energy. नो, k is some coefficient expressed in joules। कहीं लिखा नहीं k is the kinetic energy, some constant, the अच्छा। value is given to be 0.5। So they could establish some relationship between the retarding force and the displacement। कोई निकाल लिया इन्होंने relationship अपने आप ही, और एक artificial type का relationship बना के लिख दिया to show it's a variable force। So it's a variable force, so which means fx dx, and put the value of fx as this when you find what work done by this force। You have to find the final kinetic energy of the block as it crosses the patch। So पहले तो patch का diagram बड़ा clear होना चाहिए। How does a patch look like? So the patch starts, if this is your origin, the patch starts from here, 0.10, Point and then it continues maybe till 2.01। 010। Okay, ठीक है। So final इस kinetic पैच में जो आपका वो हुआ है, right, is the focus, and there is no retarding force here, so there is no loss when it comes to friction। So इधर इसके बाद भी कोई loss नहीं है,
2.01 के बाद मेनली ये पैची फेज जो है रिटार्डिंग फोर्स वाला, but it's not a mu n, obviously it's a variable force which is getting applied. And how does what with what velocity it enters the patch? 2 meter per second. So when it enters here, it is entering with 2 meter per second. The question is, when it leaves this patch, right, what is its velocity? So this patch will result in some wastage of energy, right? Accelerate तो कर नहीं रहे आप, मान लो आपने बॉल फेंक दी और इस पैच के थ्रू अगर बॉल गई तो how much energy loss the ball will suffer. If you know that, then you know कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी और इस पैच के थ्रू जाने में मेरा कितना लॉस हो गया. And of course, if you know the final kinetic energy, so this patch specifically acts as mainly negative work supply to the body, right? It supplies negative work. So agar it entered with half mv square, that half mv square will get some negative work being applied on it, and so that half mv square, after getting some negative work, will become equal to half mv final square, which is a smaller kinetic energy, because a negative work got applied on it by a retarding force. And that negative work is fx dx integration. Make sense? इसे Okay. उसमें इंटीग्रेट कर देंगे. हाँ, लिखो इंटीग्रेट ना कर. यार. हाँ, yes, of course. Why are you worried about technique? Think in terms of what's happening in the situation. It's not a maths question. हमने लिखा था the work done in a variable force is f dx. That is what we learnt. So fx dx होता है. f की जगह ये डाल लेंगे. ठीक. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. मैथ्स देख लेंगे. कॉन्सेप्चुअल वी हैव क्लैरिटी. तो इससे हम बेसिकली टोटल रिटार्डिंग फोर्स निकाल. सॉरी, टोटल रिटार्डिंग फोर्स निकल जाएगी ना. नहीं, वर्क डन निकलेगा एफ एक्स डी एक्स से. द वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स. एफ एक्स डी एक्स force into displacement in the opposite direction will give you negative work. Okay. Not clear? अच्छा, ठीक है. Yes, see, you have to revise every day. ये सब हमने पढ़ लिया था. सारी कीननेस क्लास अटेंड करने की है. रिवीजन, असाइनमेंट, एग्जाम, ये भी कीन होना चाहिए करने के लिए. माइनस के अपॉन एक्स को इंटीग्रेट कैसे. लॉग एक्स. के की वैल्यू तो पता ही है, फिक्स्ड है, तो इंटीग्रेट होगा नहीं है. तो कैसे लिखेंगे इसको. Okay, let me tell you. So integral of 1 by x is equal to log x to the base natural log e. So this will become minus k log of 2.01 minus log of 0.1. So अब you मैं थोड़ा can बहुत लॉगरिथम के बारे में बता दूं क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया. पहले एक्सपोनेंट पता होना चाहिए उसके लिए. कुछ नहीं, log is a function which has a expansion. log टेबल देखने आता है ना, मुझे लॉग ही नहीं पता क्या होता है. Okay.
Okay, so let me write the values. We'll have to do a session on logs, how to see a log. Okay, so इसकी वैल्यू आती है log of 2.01 upon 0.1 की हाँ पर 20.1 log table से. So if you have log of a minus log of b, it is equal to log of a by b. Okay, and this is minus log of 2.01.01. So this will become log of कितना हो जाएगा log of 20.1. नाउ इसके बाद इस स्टेप के बाद ऑब्वियसली k से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये. सो ऐसे ही मल्टीप्लाई छोड़ बाय दे k. इसको। हाँ छोड़ सकते हो, नथिंग रॉन्ग, बट यू शुड नो हाउ टू सी लॉग टेबल्स बिकॉज जेई के एग्जाम में या कहीं पे भी केमिस्ट्री में भी वी विल नीड लॉग टेबल्स. एक बता देना कैसे होते हैं लॉग और हाँ ठीक एक्सपोनेंट्स। है. So the value is to be found out. Let's say the value of this comes out to be around 3. Log of 21 point की 3 आ जाती है. तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, द वर्क डन ऑन द बॉडी विच इज अ 1.3 नेगेटिव आ वर्क. रही है 20.1 की। क्या आ रही है? 1.3 माइनस 1.3। ओके, इंटू 0.5 है ना, ये रहा के. सो दिस इज log 20 की वैल्यू देखी होगी. नहीं 20.1। ओके, कितनी आ रही है? 1.3। ओके, ये लिख दी. ठीक है 0.65 आ गया। हाँ, और ये कितना आ रहा है? तो दिस इज अ नेगेटिव वर्क which got done through this journey on the body. हम्म, Okay, so what is the final kinetic energy? ठीक है वो डेल्टा के वाला फॉर्मूला यूज कर। लगाओ, लिखो. I hope you didn't see that log 20 to the base 10 क्योंकि log मैंने of कैलकुलेटर यूज करा है। हाँ, वो base 10 होता है. अच्छा। इसको 2.3 से भी मल्टीप्लाई करना है. It is log of 20.1 base e. ई क्या होता है ई? एक्सपोनेंट. नेचुरल लॉग बोलते हैं. वी ऑलवेज यूज नेचुरल लॉग. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2.3 extra. Okay, so this, what are you doing now? You are saying the कैलकुलेटिंग negative work which has been done on the body. Okay, the negative work done on the body. Why this? This is your initial energy, right? नहीं सॉरी मैं गड़बड़ नहीं, कर सही है. This is initial energy. सही करा है. नहीं फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता ना। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। वो तो फाइनल माइनस इनिशियल से क्या निकलेगा? वो क्या कहते लॉस. हैं रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? फिर मैग्नीट्यूड लो. फिर वाई यू राइटिंग करेक्ट? ये तो लॉस है तो फिर इसको प्लस लिख दो ना. आइदर राइट वर्क वॉज एडेड टू द बॉडी, राइट? ठीक है चलो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ वॉट इज द इनिशियल एनर्जी कंटेन्ड इन द बॉडी? ये यस। एड वर्क टू दिस. इसमें वर्क ऐड कर दिया, नेगेटिव वर्क, और इसको लिख दिया इक्वल टू द फाइनल एनर्जी. So this is your kinetic energy initial to which you have added negative work and therefore your new kinetic energy has reduced. ठीक है वो भी नेगेटिव में आ रही है मतलब। 2 minus 0.65 नेगेटिव क्यों होगा?
नहीं पॉइंट और इंटू 2 भी होगा अभी तो, +2 हो जाएगा तो 1.35। 1.4 1.5 एक्चुअली, अगर 0.23 से मल्टीप्लाई 2.3 से मल्टीप्लाई करो तो 2.3 से। हाँ, जो आपने बोला था ना लॉग, नेचुरल लॉग। हाँ, ये 1.5 ठीक नहीं है हाँ तो मैंने इसमें वैल्यू। 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 आ रहा है। हाँ ठीक है, 1.5 इज फाइन। +2। -0.5। -1। ठीक है, आई थिंक यू कैन डू द कैलकुलेशन। ये माइनस तो नहीं है, प्लस सही है। अच्छा 2 प्लस। माइनस 1.5 इज 0.5। अच्छा सॉरी 0.5। यही तो गलतियां हो रही हैं तुमसे सारी पेपरों में। द नेग्लिजेंस इज कॉस्टिंग यू मार्क्स। पूरा पेपर आता है, पूरा पेपर एनसीईआरटी से, नंबर नहीं आते। डन। 1 मीटर पर सेकंड। बढ़िया, गुड है। ओके, आई विल शेयर अ ग्राफ विद यू, एक्सप्लेन मी व्हाट इट इज, and then you will do a numerical. But first, we will discuss the graph. Logic. There you go. Explain me what graph is this. Try. Not that you may know, but कल हमने ऐसा ही मिलता जुलता ग्राफ करा था for a ओ वेल वाला। hypothetical situation है। वेल। वेल। हाँ, something like that, but not exactly identical. इसमें देखो क्या क्या दिखा रखा है, कैन यू सी? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो। It's for a spring connected with a block. So if you एफ connect a इक्वल्स spring टू with a माइनस block, के अपॉन एक्स। हाँ जी, एफ इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स। अपॉन x ने into x. अच्छा, एफ टू माइनस के, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। Yes, it's called restoring force. But the moot point is these graphs which you're seeing are what shapes? पैराबोला। Parabola. That is correct. What are they trying to depict? Do you see at any point if you add the energy, which is the potential energy or kinetic, V is the potential, okay? And xm, what does xm represent? xm represents the displacement of the body from the mean position. So your यस। spring is like this. The spring is like this. Okay, sorry. So let me just draw it bit neatly. So that's your block, and you connect it to a spring. So this is its zero position. If you pull it towards the left, okay, and leave it, so it will, the maximum size of the oscillation on the left is minus xm. It will reach the equilibrium point here, and it will compress the spring on the other side, xm. So it is oscillating
left and right around the mean position. So this is your right hand side, this is your left hand side. If it reaches the extreme left side, which is maximum elongation of the spring by an amount of xm, it will stop there and it will turn back. So this is your turning point where kinetic energy is zero. Your kinetic energy is zero. It's a turning point. But most of your energy is now stored in the form of potential energy of the spring, which is half k x square. So this is V. And if it is at the turning point, the complete energy is now available to you in the form of half kx km, which is a minus x whole square. Okay. So then it turns back. For example, here, whatever is the displacement will tell you the total potential energy with this formula. And since kx, which you just mentioned, is a conservative force, so therefore, if the potential energy which you get at extreme point is, for example, say 5 joules. So at any point in the motion, right, any other point except for the extreme, and look at the central point. Here the potential energy is zero. You will have the highest velocity. So the complete energy is kinetic energy at the central point. And the any other point in the motion, for example, I'm spotting these points, the total energy will appear as kinetic energy plus potential energy of 5 joules. Assuming we found that at extreme points, the turning points, the energy available is 5 joules. So which is a total mechanical energy, of which there are two parts. One is a kinetic energy. The second is U, or the spring potential energy. This is not a case of gravitational potential energy. The only difference here is it's a spring potential energy by virtue of position from the central position. How far are you decides your restirring force, and therefore how much energy gets stored in the spring in the form of spring potential energy. So there's another turning point here, right? Because it compresses the spring on this side. The spring will get compressed like this, and on this side you will have plus xm. But the idea is the same. And if you notice these half k x square, the potential energy versus displacement graph, you can see as the displacement is increasing, the potential energy is increasing parabolically. And it is true. Ux at any instant is half k x square. So it increases parabola. Whether you put x as negative or positive, the parabola is parabola. And then it reaches a top point where on both the sides there is a turning point where the complete energy is available in the form of potential energy. And if you look at the central point, which is the mean position, which is what we are referring to, that central position is concentration of complete kinetic energy, which is this blue line. So now you are completely kinetic. Although the total energy has remained same, यहाँ पे potential थी, यहाँ पे भी potential है. Center point में सारी kinetic बन गई, लेकिन total के बराबर रही. Law of conservation of energy. And assume a point like this. Here the kinetic energy and potential energy are equal. If they're equal, you can also find out what is the position of such points. And your velocity is given by half mv square at this point, for example, and your kinetic energy is half k x square always. Okay, and if you want to find out what is the relationship between v and x in a simple harmonic motion, that is also available to us. The relationship between v and an oscillating spring. But if you look at this equation, what this tells you is this point. The kinetic energy is, reducing as you're progressing towards this point. It is totally becoming potential, and the kinetic energy is reducing. So at the turning point, the kinetic energy has become zero. The kinetic energy graph, and the total energy available is potential. These 2 points are specific points which tell you the kinetic energy and potential energy have become equal. And if you notice the graph of the kinetic energy, okay, you can write kinetic energy as a fixed energy minus the potential energy.
That's your kinetic energy. So this is 5 joules, which is fixed, minus half k x square, which means if you put x equal to 0, you get some value of kinetic energy. If you increase x, the velocity goes down as you move towards the turning point. The block हाईएस्ट starts, पॉइंट पे जीरो होती है? yes, highest point मतलब नहीं, हाईएस्ट पॉइंट नहीं सर, टर्निंग पॉइंट पे जीरो होती है, velocity, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी फिर। correct. The graph becomes inverted parabola. So this graph ओके, which you see is with a minus sign, right? ठीक है। So if potential energy exhibits this behavior, reaches a certain value, draw the center and you draw this graph, just a mirror image of that, it will give you the kinetic energy. And at the center, obviously, the velocity is highest here. So you can be asked, explain the parabolic plots of potential energy and kinetic energy of a block with the help of equations. So you will say the potential energy can be written as this. This is a parabola, hence my figure. The kinetic energy can be written as a total energy minus the parabola, again in x square, because this is a number only, a fixed number minus. So this particular plot is also a inverted parabolas. Hence, both are parabola. What does the point of interchange represent? It represents equal kinetic energy and potential. What does this represent? Turning points. Everything is in potential. What does this represent? It represents the total energy converted into kinetic energy at the mean position. What does this represent? The displacement, the amplitude of oscillation, which means to, fro, and a to. So a to and a fro and a to. To and fro motion, the oscillating motion. So this becomes one complete oscillation. 1/4, half, and 1/4. One oscillation completed of a spring on a ground on a horizontal position. So this will take 1/4 of the time period. This will take half the time period, and the balance will take t4. So this is t by 4. This is t by 4 to move from minus xm, sorry, plus xm to minus xm. Is the amplitude is known as this part and this part. Irrespective of the side you are, what is the maximum amplitude from the mean position? Xm. Whether it is on this side or this side. At any other point, it's a position, which is this. What is the position? Okay, so it will be between 0 and, if the amplitude is 0.1 and 0.1, the amplitude of oscillation. We haven't done simple harmonic motion, but still I'm giving you a glimpse. How will you approach this time period if they have a mention of time period? And in the F is equal to kx, this is the spring constant. It's a property of the spring. For every 1 meter stretch or a compression, how much force is required? So you can build different types of springs which require different type of compression force and elongation force for 1 meter of compression or elongation. And that will tell you what is a spring constant. It's a fixed for a particular spring. So if you get there's a spring constant, you can use it here also in the expression of kinetic energy, and you can use it here also. And you can see the restore, this is called restoring force. So when you press the spring, compress the spring, the restoring force acting on the spring, which is very high because you have compressed it to the maximum amplitude. So X has become very high, and therefore your F restoration is very high here. If you leave it, it will go towards the mean position. Okay, and same is true here. Now the spring is elongated to an extent. Again, it holds a lot of potential energy in it. If you leave your hand from this side, the spring will again go back to the mean position. And because of inertia of motion, it will continue to move, cross this point. It doesn't come to a stop here. Because of the inertia, it has a highest velocity now. In fact, the momentum is highest here, and it goes towards the right. And you can see this is the case of a variable force because force is dependent on position. If you
elongate a spring by a very small quantity, the restoring force is very small. The longer the elongation or the more is the compression, more force you will feel in the restoring manner. Compression will push you back, elongation will pull you back. Right? So you can be asked questions pertaining to half kx square and these energy also, apart from the conventional gravitational potential energy question where mgh is involved. Here mgh is not involved. Here half kx square will be involved. But the nature of force is again conservative. Like a gravitational field exerts weight, which is conservative, this also exerts a force mg, not mgh, but kx, which is conservative. So the total energy gets converted into potential and kinetic and remains, the sum remains conserved at any point. Now do this numerical unless you have a doubt. Read it carefully, try to link it to the concept and see what's happening. The car comes and collides with a spring. Obviously, it is going to compress the spring. And the spring will then have all the energy stored in it in the form of half kx square. And the car carries a lot of kinetic energy, which means the kinetic energy of the car will get stored in the form of spring's potential energy. Scenario should be clear in the mind. That's all. And if 100% of the kinetic energy has been transferred to the spring, then the maximum compression will also happen, which is half mv square will be equal to half k x maximum square. One to five. 12,500 joules is the kinetic energy of the car. निकालना क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन. What is the maximum compression? अब ये दबा देगा उसको, स्प्रिंग को पूरी तरह से. Any spring constant given K. यस. और सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी. नहीं, K क्या दे रखा है हमें? K ये वाला के स्प्रिंग कांस्टेंट. ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है वही पूछ रहा हूँ. ये आ तो रहा पोटेंशियल एनर्जी में. This energy of the car, which you have calculated, what happens to it? The car comes and collides the spring. हाँ. These tests actually happen. जब कारें बनती हैं, उनका एक टेस्ट होता है, collision test. नहीं, वो तो दीवार ठीक से है. भी मारते हैं. ये स्प्रिंग कार का आई, ये कांस्टेंट क्या स्प्रिंग है? पे मारे. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? उस K की वैल्यू क्या है? ये तो लिखा हुआ है. अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके. Hey, your brain seems to be very occupied brain. Where are you distracted, man? What keeps you distracted? ये Fe क्या था इसमें? क्या हमने लिखा है? Potential energy of the spring.
हाँ जी, एनी डाउट्स? नहीं, समझ आ गया। सारी एनर्जी कार की स्प्रिंग ने एब्जॉर्ब कर लेनी है और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा एक्स से, एक्स मैक्सिमम। Yes. 4.76 meters. ओके, सिंपल कैलकुलेशन राइट, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं. नहीं नहीं, हो गया। There is nothing to be done, right? If you understand what it is. यस सर। Now comes the tricky part. क्या है सर? Now, same question, the scenario changes. Take this as a friction. अब ये कैसे करेंगे? जैसे वो करा था यार. You found the compression, right? हाँ। Think about a scenario like this. जब कार आके स्ट्राइक करती है स्प्रिंग को, हाँ जी। this is your spring and the car comes and strikes it. ये टक्कर हुई कार की, right? Diagram number 1. Diagram number 2 में I'm drawing a compressed spring. ओके। ठीक है? So let's say this is a compressed spring. During this time, यहां से लेके यहां तक compression होगी जो निकाल ली आपने. हाँ जी। During this compression, you moved a certain displacement, right? Which you found out. ये। And there is a friction now, which means it is opposing the motion हाँ जी। throughout this motion. So you lost energy during this time. Friction has done negative work on you, na, throughout. हाँ। हाँ जी। So find the negative work which has been done on you. The frictional force multiply by is the negative work being done by the friction. So whatever is a kinetic energy will get reduced by this much amount. So if your kinetic energy was half mv square, now part of it is getting used against friction and the balance is getting used for compression. इससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। Velocity तो दे रखी है. अच्छा, पूछा तो ये है. What is, where is your मैक्सिमम। mind, man? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा. पूछा क्या है, बोला क्या है. थिंक, सोच के बोलो. ये देखो, दैट मीन्स इफ यू हमें एक्स सेंड इट स्क्वायर विद निकालना 5, है। एग्जैक्टली, कम हो जाएगा ना क्योंकि वेस्ट हो गई ना एनर्जी. Here is the wastage, the dissipation is happening here. Also notice if the block is here, it is compressing. तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे ही काम कर रहा है ना.
जैसे रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे काम कर रही है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी इसी में काम कर रहा है। सो ये द वेस्टेज है कंप्लीट, दिस इज कॉलोसल वेस्टेज, नेगेटिव वर्क डन। One way could be to write it. I have my energy as half mv square. I am doing some negative work on it. My final will be half kx square. बट ये नेगेटिव होगा, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? डोंट वरी यस। अबाउट कैलकुलेशन। हमें इतनी मैथ्स है, आई बिलीव यू नो हाउ टू डू एड एंड सब्ट्रैक्ट। Don't worry about that. Think right now. Have you understood what's happening? That's all. Nothing more than that. कैन Okay? आई, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना ले इसका एक। कोई जरूरत नहीं है। Wait. All right. First ensure that you are spot on the concept being learned currently. Free body diagram ki if you want to practice, there is a lot of question available in the books you have. ये सिचुएशन का Okay, so let's say you have the next question now. Okay, I'm going to the next page because I think this page is dead. Okay, so here is your next question. Okay. ग्राफ नहीं दिख रहा। Oh, let me just recopy it. लो जी 5.1. वी नॉट क्या है? The maximum potential energy क्या लिखा था? Sign of work done by the, but state carefully, ये ग्राफ इसी का है? ग्राफ इसी का ही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, इसका है ये शायद। नहीं 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 है। 5.2 का है ये। Yes, I was wondering. A work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. Positive. Hmm? Positive. What? Explain, समझ नहीं आया। Work done by a man. Why? इस तरफ थोड़ा ना बोलना होता, रीजन भी तो देना होता है यार। ये खाली स्टेट करने को बोल रहे हैं कि वर्क डन नेगेटिव है कि पॉजिटिव। हाँ बताओ, रीजन बताओ ना। क्योंकि It's not dissipative. The displacement and the force is in the same direction. Fs cos 0. ऐसा Fs कहाँ है? cos 0. यस। लेकिन बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बंदा जो रोप से डायरेक्टली खींच रहा है ना ऊपर, हु इज डूइंग द वर्क? टेंशन। टेंशन, द रोप एक्चुअली। सो द टेंशन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। वेट तो उल्टा है, वेट तो तो नीचे है। तो वर्क डन बाय द मैन एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम टेंशन इन द रोप। यस। ठीक है, पॉजिटिव। ओके, अब ऊपर वाले वर्क केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम कर रही है?
नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा। ऑपोजिट डायरेक्शंस आर देयर, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, नेगेटिव। ठीक है। Work done by an applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity. Positive. बट इट इज मूविंग विद हार्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी यार, इसका मतलब अच्छा, द, applied force is zero. अच्छा अप्लाइड फोर्स, ओके अप्लाइड फोर्स काम कर रही है विद हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो पॉजिटिव है ना। तो वो अगर वो वर्क डन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ क्यों नहीं रही? अच्छा तो कैंसल्ड बाय फ्रिक्शन। या applied force is equals to the frictional force. या सो या तो नेटवर्क विल बी जीरो, हाँ जी, ठीक है, applied force पूछा। अंडरस्टूड। ई, E. Work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum bringing it to rest. Opposite direction है, negative. डिसिपेशन है, वाइब्रेटिंग पेंडुलम धीरे 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 रुक गया ना, हाँ, डिसिपेशन है तो मतलब फ्रिक्शन ही होगा, रेजिस्टिव उल्टा ही होगा, ऐसे जाओगे मैंने तो ऐसे नेगेटिव ही तो लगेगा, बोला सर। ठीक है। रीजनिंग भी आती है कई बार लिखने को। नेक्स्ट, रीजनिंग मैंने दी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 5.2 सही है। सॉरी, अप्लाइड फोर्स का काम निकालना है पहले, ओके। कितनी अप्लाइड फोर्स भाई? 7 मीटर। 7। हाँ, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ओके। फ्रिक्शन की अलग निकालनी है 10 सेकेंड्स में, अप्लाइड फोर्स की अलग निकालनी है, ओके, नॉट बैड। 7 मीटर।
सर हाँ जी, 35 × 5 कितना होता है? 175। सर पहला पार्ट डन। Work done by the applied force. Okay. अब चेक कर लो। 7 is equal to 2 into A. Okay. A S is equal to work is equal to, ठीक है, बढ़िया, सही है. So go force by force. First 10 seconds, ठीक है. Displacement भी निकाल ली. Good.
हो गए सारे पार्ट? एनी डाउट्स? सी पार्ट कर रहा हूँ। Okay. Any doubts in your mind कि ना work ना, done by the net force change in kinetic energy? Okay. मतलब बस मैं डी सी पार्ट पार्ट के अंदर इज बेसिकली द नेट रिजल्टेंट. ठीक है. सी पार्ट करोगे। काइनेटिक एनर्जी भी आएगा 625 जूल्स होनी चाहिए। क्या? इनिशियली तो बॉक्स रेस्ट पे ही था। ये तो फोर्स निकाली है ना अभी. नहीं, अच्छा. फोर्स नहीं है, पूरा है वर्क डन पूरा। ओके. वर्क डन. और जो फ्रिक्शन में हुआ है लॉस वो. वो सब कैलकुलेटेड है, एफ माइनस एफ के नहीं, नेट फोर्स है। अच्छा. ठीक है. सही है. नेक्स्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट. ओके. तो हमने करा ही नहीं इन इलास्टिक कोलिजन. ओके. लेट इनइलास्टिक अस. कोलिजन में बेसिकली वो होता है ना, चिपक जाती बॉडीज। आई थिंक देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अच्छा। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है. इलास्टिक में दोनों कंजर्व्ड रहती हैं. कोलिजन में हमें दो चीजों का देखना पड़ता था ना, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बोथ. सब में एक एक आंसर है, मतलब चुनना है जो. ऑल आर सेपरेट क्वेश्चंस. ओ। ए के अंदर ये चुनना है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स अनचेंज्ड. इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? So if you do positive work on a body, the potential energy of the body. इंक्रीज increases. Yeah. The work done by a body against friction always results in the loss of its kinetic energy. Yes. The rate of change of total momentum of many particle system is directly proportional to the external force. Yes. The inelastic collision हमने नहीं पढ़ा, but फिर भी we should Linear not change momentum, right? Total linear total. momentum never changes. Okay, ठीक है. ठीक है जी. So what we will do in the next classes, we will continue to do other topics of this chapter. अब हमें करना है basically, we have to do power as a separate topic. So we will do power, and then in the last we will do collision and the end. Power is a very small topic, nothing long in this. So hopefully in the next class we will complete power and collisions, and then we will do a practice session also.
ठीक है। कोलिजन का काफी थ्योरेटिकल आपको पता है, इफ यू कैन रीड इट अगेन इट विल बी वो थोड़ा गुड, इफ यू बहुत कैन नॉट, मैंने उसके अंदर भी देखा था, क्या कहते हाँ हैं, हैव अ लुक एट डायनेमिक्स इट, में। देन वी कैन, इट विल बी इजियर एंड टाइम बच जाएगा हमारा, हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे और रीजनिंग असर्शन वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक। बट वी विल डिस्कस कॉन्सेप्चुअली, वी विल डू सम स्मॉल क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। ठीक है जी, चलो जी, सी यू, टेक केयर, बाय।